So today it's my pleasure to invite Nidhi Goyal, who is not only a rising flame, she's a rising personality, a rising star, and she keeps rising. So she's a star who keeps rising, and an outstanding speaker. I have heard her several times. She's very, very engaging, and she will be speaking to us about gender and disability this afternoon. And apart from being a disability and gender activist, she is also a stand-up comedian. I had the privilege of watching a couple of her shows and seeing a few of her videos. And she's also a very good person to have a cup of tea with. So over to you, Nidhi, all yours. Hi, George. Thank you so much. I'm smiling because I'm not sure which one is a bigger pressure of being a good speaker, being a good tea companion. I could be a very grumpy tea companion, depends on which day you catch me on. But thank you so much for those kind words. And it's really indeed a pleasure to be here on I-Way Encounters and to add to some of the conversation, particularly around gender and disability, and as you've requested, more focused on gender and blindness. So I was thinking how to sort of take this conversation forward. And I thought it could be a mix of what I've learned through my personal life, my life, actually, everybody's life is personal. My life, which includes my personal journey and my work journey. And I thought, yes. Just one sec, Nidhi. The ends of your, there are certain parts of your sentences which you're not able to hear. Okay. Given the micro, so just be a little loud consistently. Okay. This is better? Yeah. Okay, perfect. Thank you, George, for that. So, when we had to think about, okay, what do I bring to I-Way Encounters around gender and blindness? I thought it would be interesting to take a tour through the personal and professional learnings that I've had as a woman with a disability, as a blind woman, as someone who is visually impaired, low vision, started losing sight, and then basically became blind. And why I say personal and professional journey, there is a reason to it, right? I have genders within my families, gender and blindness discussions within my family as well, when we think about struggles, when we think about journeys, and when we think about achievements. So I'm going to start actually very interestingly in a very bubbly phase of my life when I was 4. And I think the story really began there. I was 4 and I thought I'm becoming a painter. I was working very hard since then. And I thought I'd become a painter. Okay, this is great. And this is what my destiny is. This is where I'm going to go. At 13, I continued thinking that this is my destiny. This is where I'm going to go. And this is it. I know I'm the wisest child and teenager who's not confused and who knows about what they have to do. But of course, teenage did not like that. And when I was 14 or 15, I was diagnosed with an incurable, irreversible eye disorder. For many of my blind friends, it's not a new term, retinitis pigmentosa. And so when I was diagnosed, it was very interesting because people say, oh, being a woman and, getting diagnosed with blindness, was it a big deal? I just feel like anyone being diagnosed with any kind of disability, illness, etc., chronic illness, bigger disorders, brings something along with it, right? We don't know what it brings, but for me, it wasn't the understanding of gender and disability at that point. It wasn't the understanding. Okay, I'm going to pause here to ask George just a question. Should I mix it up with English and Hindi now that you see the slate of audience, or should I keep it to English? George, just unmute yourself from your end, please. George, you're still on mute. Can you hear me now? Yes, perfectly. Yeah, so the answer to that question is yes, Hindi and English definitely, but don't wander away to Bengali or Marathi. I won't go to Marathi, Bengali, something I don't know. So we're safe. Hindi and English, yeah. Okay, great. So, आप टीनेज में होते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़े स्मार्ट हैं, बहुत ही, आपको पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में कर ली है और पूरी दुनिया को अक्ल नहीं है और आपको बहुत अक्ल है, और ये सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं.
पर 15 बरस की जब मैं थी और जब मुझे ये डायग्नोसिस मिला, तब सबने मुझसे ये पूछा कि अरे भाई तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा, तुम एक तुम लड़की हो, ऊपर से तुम्हें पता चला तुम विकलांग हो जाओगी, तुम देख नहीं पाओगी। और बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है इसका मेरे पास कि मुझे कुछ पता नहीं लगा था उस समय पर, उस मोमेंट में, इन दैट मोमेंट व्हेन यू आर डायग्नोस्ड विद अ डिसेबिलिटी, इट्स नॉट लाइक यू नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. But my journey since then sort of slowly and surely revealed how my life would be different, not just as a person with a disability, but as a woman, and then as a woman with a disability. Now, people say being a disabled woman must be such a big label. कि बहुत बड़ा एक लेबल है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोग बोलते हैं तुम विकलांग महिला हो, ये कैटेगरी कितनी बड़ी हो जाती है. आई थिंक हमारे देश में उससे भी बड़ी कैटेगरी है कि तुम एक महिला हो और तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, तुम एक महिला हो और तुम्हारी आवाज बहुत तेज है, ऊंची है, right? So it's already being a loud woman, being a strong woman is a label in this society. So I was going to be navigating, and I knew by 15 that I was loud and strong and everything else. So I was going to be navigating being disabled, being a woman with a disability, being a strong woman with a disability. And it was very interesting because the disability part for me was sorted. And I say it so casually, of course, it wasn't an easy journey, but it was still sorted, you know. People go and find community. People, all of us have been in these spaces where we've gone and looked for other disabled people, other blind people, and said, अच्छा ये ऐसे किया जाता है, अच्छा अब मैं और विकलांग व्यक्तियों से मिली तो मुझे समझ आया. But मेरे लिए community was at home. I have an elder brother. We are 3 siblings. My elder brother is also blind, right? And by the time I was diagnosed, he had fully lost his sight. He was a very successful MBA student. I mean, I call him successful already because he was chasing his dreams, etc., etc. So the only annoyance there was कि सब कुछ पता तो घर पे ही चल जाता है, but एक बाहर वाले आके बोलते हैं अच्छा अब तुम भी blind हो गई, अब तुम भी MBA कर लेना. And coming out of this space where I wanted to be a portrait painter, I thought that was a ridiculous advice to give someone, right? Just because the brother's doing an MBA, the sister will do an MBA as well because both of them are blind. But it was also interesting because the minute I turned it down, somewhere the understanding was also कि हाँ, the brother is smarter and men do MBAs like finance and all, तो मतलब तुम कोई और में कर लो, HR में भी कर सकती हो, ऐसा नहीं कि भाई ने finance किया है तो तुम्हें finance करना है. So it really, the understanding of gender started from there, right? उसके भी पहले से, but really started from there because we never had this environment at home जहाँ पर भाई बहन में कुछ फर्क किया जाता है. कभी भी हमारे माता पिता ने या मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो तो तुम पढ़ाई नहीं करोगी, तुम लड़के हो तो तुम पढ़ाई ज्यादा करोगे. इनफैक्ट हम तीनों ही बहुत क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू बीइंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, राइट? मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात थी कि मुझे ये पता था कि लाइट तो है, ये टनल डार्क है, इसमें गिर पड़ के आगे बढ़ना है, लेकिन एंड ऑफ द टनल में लाइट जरूर है. और ये विश्वास के साथ आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है when you have this kind of narrative at home and you're privileged to be learning from people at home. But what it meant for my brother and me to be blind, what it meant for my parents, and I learned this many years later. Of course, you know, when it came to blindness, my parents had to face the same struggle. You know, scribe के लिए उन्हें भैया के लिए भी दौड़ना पड़ता था और मुझे भी सपोर्ट करने के लिए दौड़ना पड़ता था क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हों या कोई भी ऑर्डर्स हों, ना हमारी यूनिवर्सिटी सब रिकग्नाइज करती थी, ना कॉलेजेस कोई अकोमोडेशंस देती थी, तो वो उस तरह के स्ट्रगल्स तो वही रहते थे. बट बात ये होती थी कि जो समाज का रिएक्शन है, when society has to react to your daughter being disabled, it's a very different reaction. So one of the early reactions that my father received from one of his very close dedicated friend was that he should definitely hide my disability. And this conversation is important because later in my work, I saw how many women with disabilities, we don't have enough numbers, right? We don't have कितनी विकलांग महिलाओं को क्या हो रहा है, कितनी विकलांग महिलाएं exist करती हैं, ये सारे numbers नहीं होते हैं. और इसका कई बातें आपको खुद की जिंदगी से और विकलांग महिलाओं की जिंदगी से पता चलती है. So उस समय क्या हुआ कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पापा को उनके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारी सोच रहती है कि पढ़े लिखे लोगों की सोच अच्छी होगी या सही होगी या वो समझते होंगे. पर उन्होंने बहुत सोच समझ के ये कहा कि आपकी बेटी है, विकलांग है, ब्लाइंड है, होने वाली है, मतलब ब्लाइंड अब हो ही गई है, आप यही मान लीजिए. तो आप एक काम करिए, जब तक इसे थोड़ा बहुत दिखता है आप किसी को बताएं ना कि इसे ये तकलीफ हुई है, और बिना बताए आप
18 साल की हो जाएगी, 2-3 साल बस रुक जाइए, और जैसे ही 18 की हो जाएगी इसका विवाह कर दीजिए, और सामने वालों को बिल्कुल बताना नहीं कि इसे दिखाई नहीं देता, otherwise. So you should hide her disability, get her married, else she will remain a burden on you all your life. When this narrative came to me, and of course this was much later in life, I also looked back and I realized the pressures that families face because of this difference in the gender reality of persons with disabilities. Right? And now what happens to gender reality is that women in general in society are considered to be burdens, right? In many, many countries. And we all have a very comfortable lens towards it. We say ये सब तो गांव में होता है, देहात की बातें हैं, ये हमारे शहरों में थोड़ी औरतों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है. औरतों को कोई भी जगह हो, irrespective of geography, of demography, of class, of caste, of ethnicity, many families treat just having a girl child a burden. Within that, if you have a girl with a disability, the understanding of burden exponentially increases. And I say I'm very privileged, right? I'm privileged because my family did not discriminate between the brother and sister, but the family also found it valuable to invest in my education, in investing in my independence, and they gave me the space to find my path. बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम जब स्टूडेंट्स होते हैं तो या कहीं भी करियर पाथ जब हमें चूज करना होता है तो हम कई बार हर्ड मेंटालिटी में चले जाते हैं, और इसमें होता है कि चलो ये कर लेते हैं, हर कोई ये कर रहा है, हम भी कर लेते हैं, अच्छा ही होगा. मैं 3 बार या 2 बार एक्चुअली ऐसी मेंटालिटी में जाते जाते रुक गई. मैंने CFA की तैयारी की, फर्स्ट लेवल की, और एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले कोल्ड फीट कह सकते हैं, कुछ लोग कहने के लिए कोल्ड फीट कहते हैं, कुछ लोग कहने के लिए कहते हैं कि तुम्हें सही समय पर बत्ती जल गई. But the point was that I sat down with myself and I said, what are you doing? You're ready for the exam. You've learned, you've prepared the entire year. You're at par with your friends who are preparing for CFA. But did you want to do this? I did the same with the Bachelor in Management Studies. I prepared and I asked myself, yes, you're capable, but do you want to do this? And there are very few people with disabilities, and definitely very few women with disabilities who are able to ask this question of themselves. हमें हमेशा बताया जाता है कि जो मिल रहा है उसे ले लो, राइट? और अगर आप महिला हैं तो आपको एनीवे बोला जाता है कि देखो यार, तुमको एक तो पढ़ने का चांस मिल रहा है, तुम चुपचाप जो हो रहा है ना, जो सब बोल रहे हैं वो कर लो, क्योंकि फिर ये भी चला जाएगा. और इस तरह की कॉन्वर्सेशन हमने बहुत विकलांग व्यक्तियों के साथ देखी है. हम ब्लाइंडनेस के साथ हमने ये बहुत बार सुना है कि देखो यार, तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतनी तो मिल रही है, इतना कर लो, राइट? At least you're getting this, do this. And I think that was different for me. And this is very important again to remember the conversation around at least, because this influences our choices going forward as men, women, and others living with a disability. And I do want to say men, women, and others, because our world is not about just men and women. When we say gender, it's not about just men and women, right? So ये जो आप कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इस जर्नी के साथ I went forward with this thought, and I wanted to do a post-graduation after a master's in commerce. I finally found what I wanted to do, and I chose to opt for a post-graduation in communications and media. And it's very interesting because first they had a doubt that I was blind and I couldn't do mass comm. And once I overcame that, the issue was not so much that I was blind. The issue was that I was a disabled woman and I had a mind of my own. Right? So if I had opinions, so किसी ने सोचा होता है कि आप सिर्फ दया के पात्र हैं, तो आपको कोई बेचारा समझ के अगर चलो ठीक है इसे कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं, और उसके बाद उन्हें समझ आता है कि आप सोच भी सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, और आप डिसअग्री भी कर सकते हैं. जब तक आप सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब तक तो ये स्वीकारा जाता है. The minute you want to put forth a strong idea, the minute you want to put forth dissent, disagreement, उस समय बात आती है कि आप या तो विकलांग हैं, आप ऊपर से महिला हैं, और आप विकलांग महिला हैं. Again, so my batchmates, my professors in this mass comm course got more worried about me being a blind woman, but also like me being an assertive blind woman, having an idea of her own. And उस समय से मैंने थोड़ा और सोचना और ढूंढना शुरू किया. एक्चुअली थोड़े पहले भी मैंने परखना शुरू किया था, जब
छड़ी लेने की बात आई थी, so I use the white cane and I walk with the white cane. And हमारे बहुत ब्लाइंड भाई बहनों के लिए बहुत एक पेचीदा मामला होता है, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन होता है फैमिलीज के लिए. मेरे लिए कॉन्वर्जेशन सिर्फ इतना था कि चलो आई थिंक आई एम रेडी फॉर अ व्हाइट केन. भैया, यू आर लिविंग अब्रॉड, व्हाई डोंट यू जस्ट सेंड मी अ व्हाइट केन फॉर मी? Why don't you send a white cane for me? I don't like the one that's available here. I think that's the only tantrum I threw around the white cane. And that was it for me, right? But the only question that fleetingly concerned me was, my brother uses it. It's not a shame. It's not a stigma. It's not a problem. It's a tool for empowerment. But being a woman with a disability, will the use of this white cane, will announcing to the world that I can't see, open me up to more susceptibility, vulnerability? तुरंत मैंने खुद को बोला कि यार छड़ी हाथ में है तो सामने वाले को दिखेगा कि मुझे दिखता नहीं है. इट विल ब्रिंग वल्नरेबिलिटी, बट इट ऑल्सो मीन्स कि सामने वाले को पता होगा कि भैया इसके हाथ में छड़ी है, घुमा भी सकती है और मार भी सकती है. आई थिंक दैट वाज मोर ऑफ माय पर्सनालिटी. And so the decision, this question was very fleeting in my mind, right? But the recognition that women with disabilities have specific challenges grew even more and more as and when I started moving closer to the community and closer to the sector per se. यहाँ पर जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया और जर्नलिस्ट का, I worked briefly as a journalist for a year, I think, and moved into the development sector and started working with NGOs on rights of women and girls with disabilities. जो सबसे पहली बात मेरे सामने आई वो जेंडर रोल्स और डिसेबिलिटी इमेजरी. ये दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तब हमें समझ में आता है कि विकलांग महिला की सिचुएशन क्या होती है. अब डिसेबिलिटी इमेजरी के बारे में तो हम सबको पता ही है कि या तो वो बेचारे होते हैं या हमें भगवान माना जाता है, दिव्यांग माना जाता है, सॉरी. सो या तो हम बहुत बेचारे होते हैं, या तो हम दिव्य होते हैं, या तो हम बच्चे होते हैं, राइट? जिन्हें कोई एजेंसी नहीं होती है, कोई ऑटोनॉमी नहीं होती. और एजेंसी ऑटोनॉमी बड़े शब्द लगते हैं, पर निर्णय करने की ना, निर्णय लेने की ना क्षमता होती है, ना कोई तरह की समझ होती है. The idea is of being pitiable, inspiring, or being superly infantilized, right? This is a disability imagery which we see everywhere and the common perception around disability. अब जेंडर रोल्स क्या हैं? महिलाओं से ये एक्सपेक्टेशन रहती है, आप कोई भी एड उठाकर देख लें, महिला परफेक्ट होनी चाहिए, राइट? कोई भी तरह का रिप्रेजेंटेशन देख लें, सुपर मॉम, सुपर वाइफ, सुपर, हर चीज सुपर होना चाहिए. वो घर पे भी काम कर लेती है, वो बाहर भी काम कर लेती है, वो पूरी रात बच्चे को खांसी हो रही है तो जगकर उसकी छाती पे बाम भी लगा देती है, और सुबह बड़े स्माइलिंग वे में सबका टिफिन बनाकर और फिर बाहर जाकर पैसे कमाकर वो पैसों का हिसाब रखकर सबसे सस्ता सर्फ डिटर्जेंट या सर्फ या टाइड या जो भी डिटर्जेंट है वो भी खरीद लेती है, राइट? दिस इज द आइडिया ऑफ अ वुमन. द जेंडर रोल दैट्स असाइन्ड टू हर इज ऑफ अ गिविंग, कंटिन्यूअस गिविंग, सैक्रिफाइसिंग पर्सन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में. एंड व्हेन दीज टू कम टुगेदर कि भाई डिसेबल्ड हो तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, लाचार हो, और तुम महिला हो तो तुम्हें एक्चुअली करना क्या है? सुपर होना है. और तुम विकलांग महिला हो तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती. When you're a woman with a disability, you cannot be the provider of care because a woman has to be a provider of care. You're a disabled person finally, so the lack of being able to provide care, the lack of nurturing gets combined with this helplessness and burden space where you come from, right? और वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली जो इमेज है, which almost makes women with disabilities not women enough. तो कई बार कहते हैं कि तुम विकलांग महिलाएं यहाँ पर मत आओ यार, ये सब तो महिला आंदोलन की, और मुझे आज भी ये बातें सुनने मिलती हैं कि ये सब तुम विकलांग कॉन्वर्सेशंस में लाओ मत, डिसेबिलिटी राइट्स की कॉन्फ्रेंस है, तुम ये सब महिला आंदोलन में लेकर जाओ. सबसे पहली बात है कि महिला आंदोलन में विकलांग महिलाओं को महिला माना नहीं जाता है. सारे एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट द बेसिक फाइट इन सोसाइटी इज टू रिकग्नाइज women with disabilities as women first. Like we have a long-standing fight of people with disabilities being recognized as human beings first, right? That way, there's a fight of women with disabilities being recognized with women first. अब मैंने जो आपसे कहा कि मुझे पता था कि महिला होने के नाते विकलांग महिलाओं को भी हरासमेंट होता है, एक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है.
बट ये डिसेबिलिटी जेंडर का चक्कर क्या है ना, उसकी नुआंसेस क्या है, पेचीदा क्यों है इतना, ये सारा मैं समझने लगी जैसे ही मैंने अपना काम एनजीओ सेक्टर में शुरुआत की काम की, है ना. So I started working on rights of women and girls with disabilities, and it was very interesting because I started working on a gap area, which was many years ago a gap area, right? We still have conversations around it today, which was on sexual and reproductive health and rights, sexuality as a spectrum. Now it was very interesting because this reality of being a woman with a disability was coming back to me in a very powerful and not so positive way when the community started responding to disability, gender, and sexuality. You'll not be surprised that not many non-disabled people labeled me, right? The first label that I received while I started work around disability, gender, and sexuality was within the community. And the community responded by saying that this is not a real issue, right? That sexuality and gender are not real issues within disability community. It was also very clear that working around a taboo subject like sexuality brought a lot of, not really backlash is a very strong word, बट जो तरह के लेबल्स आए वो बहुत क्लियर था कि इस तरह के लेबल्स हम इसलिए लाए हैं क्योंकि एक युवती है ना, सो यंग डिसेबल्ड वुमन is talking about something like sexuality which we don't accept in society. So वहां पर विकलांग महिला होने की जो बात है, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत स्ट्रांगली पलट कर मेरी तरफ आया और एक अच्छे रूप में नहीं आया, right? Let's put it that way. It was also very interesting because knowing about harassment is one thing, but also from the community, the diverse kind of responses. It ranged from people really thanking me, saying, there's a very interesting subject that you've broached, and thank you so much because we're really having a silence around this, right? Disability, gender, sexuality, and violence. But I can't tell you how many men with disabilities circled back with me with nonsensical conversations because they thought once a trainer of sexuality will always remain fast and loose, or will be fast and loose. Always remain was an understanding that they built in their own heads, right? And the concept of that we need to know our bodies, that this kind of work makes information accessible, which we've all been fighting for, right? Around gender, sexuality, disability. These kinds of conversations help us reflect, help us become more confident human beings around self and sexuality, around sexual orientation, gender identity, around speaking out against violence, around negotiating relationships, marriage, etc. It was very interesting to see all that. But what gave me strength at that point? Community, right? So एक तरफ मैं कह रही हूँ कि community से बहुत ऐसी वैसी हरकतें भी हुई, labels भी मिले, पर दूसरी तरफ मैं ये भी कह रही हूँ कि जो और विकलांग महिलाएं थी, जिन्हें जैसे मैंने इंटरव्यू किया जब मैं sexualityanddisability.org वेबसाइट लिख रही थी, co-author कर रही थी, मुझे आज भी याद है कि 2 मैंने young blind women को, I think they were below 40, उन्हें इंटरव्यू किया था और उनके साथ कॉन्वर्सेशंस आज भी मुझे याद हैं. एक ने कहा कि यार मुझे कोई पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, मेरे सब फ्रेंड्स का दिमाग खराब हो गया. I said, but they should be happy if you found a partner and if you want to get married, it's your choice, right? उसने कहा नहीं, they feel like blind को blind से शादी नहीं करनी चाहिए. And this concept wouldn't sit in my mind. I was like, but why? She said, because they have their opinions. I said, on what? And she said, they feel that we're not going to be able to live our life. But I don't want to be with a sighted person. And I said, okay, I find your friend's reactions very strange, but I find your reaction, in my head, I was like, I find your reaction also very strange. Why do you not want to be with a sighted person? Or yes, as I think I was 24, 25. उस उम्र में आप खुद यंग हैं, विकलांग हैं, ब्लाइंड हैं, महिला हैं, आप सोच रही हैं यार कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, मैंने कुछ सोचा नहीं है क्या, am I somewhere wrong within relationships? And it was very interesting because she circled back and she said, नहीं, कोई sighted होगा तो मुझे लगता है मेरा फायदा उठाएगा. These conversations stuck within me since then, right? There was another woman who was being pressurized to partner with a sighted person. And she was pushing back the pressure, not because, with a blind person. And she was pushing back not because the man was blind, but because she was being forced into it.
एंड आई थिंक इस तरह के जो मुझे कहानियां पता चली, जो महिलाओं की लिव्ड रियलिटीज पता चली, उससे जाकर मैंने पुराना एक रिफ्लेक्शन किया। मैं सोचने लगी 2 फिल्मों के बारे में। हैव पीपल हियर सीन मन एंड ब्लैक बाय अ वेरी वेरी फेमस फिल्म मेकर? अब मैंने बोला यार यही तो प्रॉब्लम है, हमारी इमेजरी स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग आवर चॉइसेस। और ये हमेशा ऐसा ही होता है यार, विकलांग महिला होती है और वो उसे फिल्म में लेते हैं तो हमेशा पार्टनर नॉन डिसेबल्ड होगा और उसे बड़ी तकलीफ हो रही है और वो बहुत कुर्बानियां दे रहा है, ये दिखाया जाता है, राइट? और जबकि ये इस तरह का नैरेटिव विकलांग पुरुषों की तरफ कम होता है। हमेशा अमिताभ बच्चन की आपको फिल्में याद होंगी, वो हीरो को सिंपैथी क्यों मिलती थी? क्योंकि उसकी एक बूढ़ी माँ होती थी और एक अंधी बहन होती थी, राइट? सो हमें डिसेबल्ड वुमेन को बहुत इमेजरी में इस्तेमाल किया गया है टू इन्वोक पिटी, टू शो अस लेस केपेबल एंड अनइक्वल। और इसी तरह से बहुत लोगों की सोच इन्फ्लुएंस होती है, और ये मुझे कई मेरी वर्कशॉप से पता चली। सो थ्रू माय पोजीशन एट पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैं पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम करती थी, मैंने सिर्फ एक वेबसाइट को ऑथर नहीं की। 2015 से 2018-19 तक रादर मैं वहां पर सेक्सुअलिटी डिसेबिलिटी नाम का प्रोग्राम हेड कर रही थी, जो विकलांगता, यौनिकता, लैंगिकता और हिंसा, इस पर वो प्रोजेक्ट काम करता था। तो मैंने पूरे देश में I conducted workshops across the country with over 2,000 youth with disabilities. 80% were women, and 20% were others. And through those conversations as well, what came to me was there is a lot of inhibition and understanding around gender and disability. The biggest question comes when gender roles get mixed with relationships, right? अब आप कहेंगे कि विकलांग मर्दों को क्या कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कंटिन्यूसली विकलांग महिलाओं की बात कर रही हैं। होती है। मैस्कुलिनिटी इज अ बिग क्वेश्चन। हमें कैसे दिखाया जाता है बॉलीवुड में कि ये कोई मर्द है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करके हीरोइन को बचा सकता है, और वो मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो बाहर जाके कमा सकता है, वो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड है, वो केपेबल भी है, कभी स्पोर्ट्स खेला हो नहीं खेला हो पर बॉल तो गोल हिट करती ही है, गाड़ी खराब हो जाए तो चक्का बदलना भी आना चाहिए और लॉन्ग ड्राइव्स पे ले जाना भी आना चाहिए, राइट? और कहीं बारिश वारिश बरसात वरसात हो जाए, जैसे कि अभी हो रही है मेरे पीछे और आप लोगों में से कई लोगों के आप में से कई लोगों के वहां भी बरसात हो रही है, तो इस मौसम में गिटार तो बजाना आना ही चाहिए। These kinds of imagery around what a man really is directly challenges men with disabilities, right? And it brings them in a space where they feel not manly enough, not men enough, no, not manly enough, not masculine enough. Because मर्द होने के लिए ये सब तो करना ही चाहिए। जैसे वो कहावत है, मर्द को दर्द नहीं होता, तो कोई आदमी यदि रोता है तो उसे कहा जाता है you're not manly enough, right? You're not a man enough. और इन्हीं बातों को एग्जिबिट किया बिहेवियर्स में, मेरे वर्कशॉप्स में, यूथ विद डिसेबिलिटीज एंड मेन एंड वुमेन विद डिसेबिलिटीज, राइट? जब ये सवाल आता था कि आप लोगों को किस तरह का पार्टनर चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ विच हु वुड यू वांट एज योर पार्टनर। अभी आप ये किसी और को युवा से पूछेंगे तो वो शुरू करेंगे जिसे देखकर कुछ कुछ होता है, जिसकी चॉइसेस हमसे मैच हो। You will not believe that almost all women with disabilities, out of this 80% of 2,200 or whatever number it was beyond 2,000, all of them would start the conversation with, अच्छा हम blind हैं या हमें X disability है, तो हम same disability का partner लें, दूसरी disability का लें या non-disabled लें। और ये तरह का जो conversation है, इस तरह का, this comes from a very ableist lens of them influencing us. You know why you want a partner with the same disability, and if this is the only way you think about a partner, because people are like, oh, they'll understand you better, forget everybody else doesn't understand you. Somebody else, some other disability partner, because then you all can be complementary to each other, no, help each other grow and live. And non-disabled partner is the best because they will be able to take care of you. And this conversation influenced every person with a disability, right? Men or women. But women were more open to saying, it's okay, we'll have a disabled partner. I have a problem with that. I have a problem with that because women with disabilities come from a space where they are told that because you're a woman and you're disabled, you need to sacrifice.
And my second problem is that when they feel it's a sacrifice, they're putting disabled people lower than non-disabled people. And this is a common phenomena. हम बहुत बार realize नहीं करते हैं, but जब personal spaces में बात आती है, तो कई बार विकलांग होने के बावजूद हम सभी गैर विकलांग व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों से ऊपर का दर्जा देते हैं. And this came out very, very interestingly in a workshop for blind youth that I was conducting in Mumbai, right? And it was interesting because they were all teenagers. They'd come for a rehabilitation course, and the organization had said, it'll be very interesting. Why don't you come in and do this kind of body, sexuality, gender violence training with them? And all the boys said, it's very interesting. We had this rating scale. As a trainer, it was my job to listen. So I first asked them, what rating scale do they have? And the conversation was that if they got a sighted partner, girlfriend in their cases, because they were all heterosexual, they would give that guy 11 out of 10. If they had no girlfriend, of course, either minus marks or 0. And if they had a blind girlfriend, the guy would get 3 out of 10. And the blind girls were sitting right there. And this was a very open conversation that one could have. This is it's a conversation that's objectified, right? When men sit and rate women's figures, when men sit and rate women's skin colors, when men sit and rate women's voices and say, iska ye asset acha hai, ye to the language of ye to mal hai, isko date kiya to 11, to tu champ, nahi to tu gawar. And I'm sorry for using these words, the mal, the gawar, all of those abusive words, because this is the language, the framing, the sexist framing that we internalize. Now, sexism or ableism are two power structures, okay? We always say, अरे पूरी दुनिया हमको ableist lens से देखती है, but हमें भी अंदर internally देखना है, खुद को reflect करना है कि क्या हम खुद की community में sexist lens adopt कर रहे हैं, क्या हम बाहर की दुनिया की तरफ हम sexist lens adopt कर रहे हैं. And that was what we unpacked in this conversation, right? Moving from here, just around expressing what you want. And this is very interesting because we would have workshops where we started conversations by asking young people as an icebreaker, introduction sessions mein apne naam ke saath saath aapko kya batana hai. So we would say, tell us a dream. And it could be any dream, today my dream could be, oh my God, it's pouring, I want to have bhajia. है ना, मुझे भजिए खाने या मुझे पकोड़े खाने या जो भी और आप सोच सकते हैं. पर जब हम कहते थे tell us a dream, it was very difficult for women with disabilities to tell us a dream. और ये ना मैं स्कूल गोइंग बच्चियों के साथ 13-14 बरस की थी, उत्तर प्रदेश में इनके साथ काम कर रही थी, और मैंने उनसे पूछा, आप अपना एक सपना बताइए ना. 45 मिनट चले गए, एक लड़की ने अपना मुंह नहीं खोला. 45-50 मिनट के बाद मैंने बहुत प्यार से बोला, कोक्स किया, थोड़ा सा फोर्स किया, मैंने कहा मैं ट्रेनर हूँ, सारी जो आपके पास whatever tricks you have under your sleeve, I used all of those, and they just wouldn't speak. And I said, क्या हो गया भाई, मतलब क्यों बात नहीं करनी है? कोई बात नहीं, कुछ और बात करते हैं, पर ये सिर्फ बता दो कि तुम्हें अपना सपना क्यों नहीं बताना है. और मैं तो कह रही हूँ, छोटा सा सपना हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है एक तरह का हो. And the response that I got was, दीदी आपके पहले किसी ने हमसे ये नहीं कहा है कि तुम बैठ के अपना सपना बताओ. This speaks a lot about disability and young people with disabilities, but this also speaks a lot about being a young girl with a disability. कोई उनसे पूछता नहीं है कि उनका सपना क्या है, क्योंकि सपनों में जो निवेश करना है, जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो कई स्तर पर, particularly in societies, अब हम इंडिया में हैं तो there's different demographies, there's different culture in different places, right? And in Uttar Pradesh, we've already seen that there is a lot of gendered discrimination, etc. And coming from that environment, the gendered barriers that the young girls with disabilities faced became higher. और उन्हें ये जो बिठाकर पूछा नहीं गया, वो इसलिए ही सिर्फ था या इसलिए अधिक था क्योंकि वो विकलांग लड़कियां थी. Now,
contrary to that, हमने एक all boys workshop conduct की और उसमें blind men से कहा, और मैं यहाँ पर सिर्फ blind workshops के examples दे रही हूँ because I'm largely speaking to, the focus of IWA is visual impairment and blindness, and we want to focus on those experiences. So दूसरा मैंने एक all boys workshop की, वहां पर मैंने देखा कि इतने वोकल हैं, मुझे रोकना पड़ा कि भैया एक ही सपना बताना है, 2 3 4 नहीं बताने हैं, आपके होंगे 4 सपने पर एक ही बताइए. Now, I don't want to present this as a sweeping generalization. I'm giving 2 quick examples, but this is sort of an observation from work, from trainings, from interactions, कि विकलांग महिलाओं को अपनी इच्छाएं, अपने सपने बताने में और दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि तुम चुप ही रहो, तुम एक तो लड़की हो और तुम विकलांग हो. It's very interesting because you switch back. You have friends in the community, you interact in the community, you volunteer in the community, and you hear stories in the community. So अगर वर्कशॉप से हम दूर जाएं तो एवरीडे एंगेजमेंट के लिए हमें असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है. जो भी यहाँ पर बाहर खुद निकलते हैं, कोई फैमिली मेंबर्स या नोन लोगों के बिना निकलते हैं और किसी और से रास्ते पर मदद लेते हैं, right? So somebody was sharing with me, a man with a disability, saying it's so undignified. Accessibility, people feel like men don't need a certain level of dignity because they're men, and gender plays out in a very difficult space even there, right? So एक किस्सा बताऊंगी यहाँ पर कि there was a blind professor with a blind professor, and he was navigating the streets and was asking for help because wanted to get to the next local train in Mumbai, and there was a lady who was assisting him. And basically, she started pulling him by the cuff of his shirt. She said, I won't let you touch me and I won't touch you. तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हें अब तुम्हारी शर्ट पकड़ के खींचूंगी, तुम इस तरह से चलो. So कई बार जेंडर की वजह से डिग्निटी, accessibility for men with disabilities ये भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है. But on the other hand, again in a blind school when I was training, विकलांग महिलाओं के साथ क्या होता है. सेम एग्जाम्पल अगर आप लें रास्ता क्रॉस करने का, मैंने एक ग्रुप ऑफ यंग लड़कियों को पूछा जो ब्लाइंड थी कि तुम्हें स्ट्रीट सेक्शुअल हैरेसमेंट फेस हुआ है. ऑफ कोर्स मैंने उनको ब्रेक डाउन करके बताया स्ट्रीट सेक्शुअल हैरेसमेंट क्या होता है. उन्होंने कहा नहीं नहीं दीदी ये सब नहीं होता हमारे साथ, अच्छे हम ब्लाइंड हैं, लोग अच्छे होते हैं. ऐसे रोके रास्ता क्रॉस करते समय किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ वहां नहीं छुआ. अच्छा वो तो हमेशा होता है. So I got very puzzled. I was like, "Acha, to ye, what is this? If this is not street sexual harassment, that people touch you and take advantage of you when you're taking assistance to cross the street?" And they said, "But we attribute that to our disability. It's not because we're women, because we're disabled." क्योंकि हमें इतना बताया जाता है कि तुम्हारे साथ जो भी हादसा हो, that's because you are disabled. I do recognize I have a few points to say. But we are at 4:46. I think we can open up in 2 minutes. Maybe I'll take 2 more minutes to quickly just share एक दो incidents नहीं, but एक दो sentences में हमने ये देखा है कि आप blind हैं, महिला हैं या disabled हैं और महिला हैं, तो आपको शादी के समय बहुत एक प्रथा है कि डाउरी ज्यादा मांगी जाएगी. You have to pay more when you're getting married because of course you need to compensate for your wedding. We've seen that this fear of disability, perpetuating disability is so strong that blind girl, there was a case where a blind girl was given contraception and contraceptive medicines, and nobody told her. The father misled and said these are vitamin pills. When there's a blind woman, she wants to adopt kids, and we again have cases around this. She has to prove that she is not the primary caregiver. कि या तो सास ससुर साथ रहते हैं या तो husband सब संभाल लेंगे. Whereas in all through the country, we all consider mother as the primary caregiver, right? So she has to prove otherwise, if at all the adoption papers have to pass, right? So I just want to say that taking sensitive conversations within gender and blindness is important. We need to think about what are the vulnerabilities and what our positions as men, women, and others living with blindness or disability. What are our responsibilities? What are our positionalities? And what are our routes if this vulnerability is attacked on or misused? I have a couple of points which I will bring up maybe through the Q&A segment.
But I do want to say कि stigma तो काफी होता है blind महिला होने का, and this is a joke from my stand-up set. कि 2 years ago or 3 years ago, I don't remember, when one of my friends was sitting down and she was very serious and she was like, अरे यार निधि please यार, मतलब तू शादी.com explore किया क्या, भारत मैट्रिमोनी किया क्या, ऐसे यार तू तो बड़ी पिछड़ी हुई निकली, टिंडर के जमाने में भारत मैट्रिमोनी कह रही है. So she's like, whatever यार, टिंडर पे कर, कहीं भी कर, कहीं register हुई है तू? I said, हाँ मैं register हुई हूँ. It's like, then she suddenly realized and she paused and she was like, oh yeah, I understand, you're blind and it's difficult for disabled women to find partners. I paused and I said, baby, I'm, probably, and I said this 3 years ago, I said, you think I'm single because I'm blind? I'll tell you I'm single because I'm a stand-up comedian, because the guy knows that if he doesn't perform, I will perform about him. With that, I'm going to pause here and just open up for questions and answers.